Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 1st of July. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. If you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relative, neighbors, and let them know about this interesting platform. In this video students, we will be talking about Prime Minister Narendra Modi, who inaugurated the centenary celebration of the Acharya 108 Vidyanand Ji Maharaj in New Delhi. Then Ministry of Power has issued the guidelines for renewable energy implementing agencies. Then Bhupendra Yadav chaired the 21st steering committee meeting of the project Elephant that was in Dehradun. Then UP Chief Minister Yogi Adityanath, he laid the foundation stone for the India's first green data center in Ghaziabad. And also remember, a new international university will be setting up their campus in Greater Noida. Can you name that university? We will be discussing all these things in detail, so stay tuned with us till the end. Also students, we upload all these current affairs, that is the daily current affairs video, at 5 a.m. in the morning on regular basis, so do watch these videos. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Hello everyone, let's start with national affairs now. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the centenary celebrations of Acharya 108 Vidyanand Ji Maharaj in New Delhi. Take a note of this. He is a very famous Jain spiritual leader. Correct, that is Acharya Vidyanand Ji Maharaj. The event of this was held at Vigyan Bhavan. Where is this Vigyan Bhavan? It is in New Delhi. Who organized this event? It was organized by Ministry of Culture. Correct, take a note of this, and it was in collaboration with Bhagwan Mahavir Amsha Bharti Trust, that is headquartered in New Delhi. The next thing, remember, this occasion also marked the 38th anniversary of Acharya Vidyanand Ji being bestowed the title of Acharya. Then also remember, the sanitary year here, it will be observed from June 28, 2025 to April 2020, 2026. Right, take a note of this, important. So it was the sanitary celebration of very famous Jain spiritual leader Acharya Vidyanand Ji Maharaj at Vigyan Bhavan in New Delhi. Then during this event, remember, Prime Minister Narendra Modi was honored with the title of Dharma Chakravarti by the Jain community. So this question can be asked, that during such event, that is the sanitary event here, that Jain community honored Prime Minister Narendra Modi with which title? It is Dharma Chakravarti. Then as a part of the celebration, PM Modi also launched biographical volume, right? This is basically a detailed path, literary works, institutional efforts and role of a reformer. His book has been launched here about him. Also, PM Modi, along with Gajendra Singh Shekhawat, our Union Minister of Ministry of Culture and Union Minister of Tourism, has released a commemorative postage stamp and a 100 rupees commemorative coin on the birth anniversary of the Acharya Vidyanand Maharaj Ji. Moving on, then Ministry of Power has issued the guidelines for renewable energy implementing agencies. Now, why these guidelines has been issued? So we know that in today's world, the renewable energy projects are the utmost important, because we need to remove our dependence from non-fossil fuel to renewable projects, to clean energy, to green energy. And that's the reason we saw a few days back that green hydrogen powered buses were also launched in Leh Ladakh. Right, and these buses, they were developed by NTPC, right, of New Delhi. Now what will happen with these guidelines is that these companies, these implementing agencies across India, they will be getting the eligibility so that they can develop the renewable energy projects across India. These companies, right, that includes your NTPC, SCCI, SJVN Limited and NHPC, correct? So Ministry of Power released the guidelines for designating private companies as renewable energy implementing agencies to streamline the process of appointing eligible companies to facilitate, that is to start the renewable energy development across India.
Also, as per the guidelines, only Indian companies that are registered at the Companies Act of 2013 are eligible to apply for the designation of this REIAs, that is Renewable Energy Implementing Agencies. And here this designation, they will be remaining valid for a period of 5 years. That means after 5 years, these companies, they have to opt or they have to apply for this REIAS certification, right? Take a note of this. As per the new guidelines, you have seen, as per the guidelines, we have seen this. Moving on. Next, Bhupendra Yadav has chaired the 21st steering committee meeting of the Project Elephant that was held where? In Dehradun. So straight away question from here can be asked that name the number or which number of steering committee meeting of Project Elephant was held in Dehradun. Or second question, that 21st steering committee of Project Elephant was held where? Location we can be asked. It is Dehradun. Right? Bhupendra Yadav, who is our Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, he chaired this 21st steering committee meeting of the Project Elephant. Where was this held? In Dehradun, Uttarakhand. But in Dehradun, Uttarakhand also, where was it held? It was held at Indira Gandhi National Forest Academy, that is in Dehradun, Uttarakhand. Here they reviewed the progress of various initiatives that has been launched under Project Elephant and what can be done ahead of that or apart from that, that how we can conserve the elephants in India. Right, take a note of this. Also in this you will be seeing that Bhupendra Yadav ji, he has urged that various other ministries that include your Indian Railways, Ministry of Power, National Highway Authority of India, right, various mine developers, they also come together and they start or they support this initiative where we can conserve these elephants. Moving on. Next is we are talking about UP. UP's Chief Minister Yogi Adityanath has laid the foundation stone for India's first green data center in Ghaziabad. Here see students again, green data center. We know what are data centers. Data centers are the storehouse of data that can be fetched by various companies for the analysis or whatever information they required out of it, right? And here all the processing and storing of that data takes place. So these are the data centers. They require huge amount of electricity to run. So either they can run on non-renewable sources of energy or green sources of energy. It's their choice. But now it is being mandated that we should shift towards renewable sources of energy, right? So hence first green data center that will be focusing on renewable energy, or that means the energy generated that will be used by this data center will be renewable and green energy. Correct. So coming back, UP's Chief Minister Yogi Adityanath along with Jitendra Singh has laid the foundation stone for India's first green data center at Shaibabad in Ghaziabad in Uttar Pradesh, and this required an investment of 1000 crore rupees. Moving on. Next is Ministry of Environment, Forest and Climate Change has issued the model rules for tree felling on farmland for agroforestry. Right? See, another thing that we want to save our environment. Right, we are seeing that climate change is real and we need to protect more and more trees. We need to plant more and more trees, right? So Ministry of Environment, Forest and Climate Change, they have issued these model rules for these tree felling on the farmland for the agroforestry. Now this we are talking about a farmland. Say for example, there is a big chunk of land and the owner or the farmer of that land wants to construct a farmhouse around it. So there must be trees in it, right? Multiple trees. So in order to cut those trees, these farmers will be requiring permission and they are authorized to cut around 10 trees from that. And for that also, right, if the farmer wants to cut more than 10 trees, they must apply on the NTMS portal. This NTMS is your National Timber Management Portal. Correct. So coming back, remember, Ministry of Environment, they have issued these model rules, right? And this will promote agroforestry and simplify the regulations for the farmers of all states and union territories, right, for the felling of trees and timber transportation on the farmland. Correct. Take a note of it. Next is Amit Shah, our Home Minister, has inaugurated National Turmeric Board headquarters in Nizamabad in Telangana, right? This will fulfill a decade-long demand of the turmeric farmers in the region, and this board aims to increase the turmeric export to $1 billion by 2030. This will promote the medicinal benefits of turmeric, expand their presence in the international market, and also empower the food processing organization, that are the FPOs, that will strengthen the supply chain of turmeric. Next, international affairs students, IEP. What is IEP? IEP is your Institute of Economics and
peace. This is a think tank and they have released the 19th edition of the Global Peace Index 2025. In this index, our country stands at 150th position, and we have improved by one position because last year we were at 116th position in 2024, and now in 2025 we are at 115th position. It is Iceland that has secured the first position, and it is the most powerful country here, right? And it is for the 17th time they have secured the top position in the Global Peace Index released by IEP. This was the 19th edition of the Global Peace Index, and 163 countries took part in it. Where is the headquarter of IEP? It is in Sydney, Australia. Then students, let me show you the data. First Iceland, second Ireland, third New Zealand, fourth Austria, fifth Switzerland, and 105th is your India. Moving on. Next, India's percentage of zero dose children to the total population declined from 0.11% to 0.06% in 2024 as per the data released by United Nations. See students, when you were born, you must remember you must have taken multiple vaccines, right? So, but what this report is saying is that these vaccines that you got in your childhood, right, they are not today even not available to a certain population, right? But this population has dropped, but still there is a small amount of population that has not received it. So India's percentage of zero dose children, that means no vaccine has been provided to those children, of the total population declined. That has, it has improved. That is, now the people or the children, those who got those vaccines, are increasing, right? And it has just remained, it was 0.11% and now it is just 0.06% in 2024. Right, take a note of this. And this progress is mainly attributed by the continued and sustained efforts of the governments and various vaccination drives and campaigns that were running across the country. If we talk about such data, you can see that Yemen stands at 1.68%, Sudan 1.45%, Angola 1.1%, Afghanistan 1.1%, right? Republic of Congo, Democratic Republic of Congo 0.82%, Indonesia 0.23%, Pakistan 0.16%, right? Next is, and you can see zero dose, zero implementations plan, Mission Indradhanush, right? They were launched that have promoted these vaccines among the children. Next, 22nd edition of the SCO Defense Ministers meeting was held in China, right? SCO, what is this? Shanghai Cooperation Organization. You must have seen on various social media platforms also, students, a reel was going viral where Rajnath Singh rejected that he won't be signing the SCO defense or SCO declaration during that time. Why was that? Because he was not happy. Even we can say that India was not happy. Why? Because the terrorism declaration or terrorism discussion was not at par that India was expecting, because we saw that in Pahalgam what happened, right? Then India retaliated with with Operation Sindoor, right? And because of this, we wanted that there should have been a discussion and this agenda should have been the terrorism agenda should have been there on the meeting, but it was not at level what India was expecting. Hence, India rejected that we should have more discussion on terrorism, because we need to stop this terrorism in order to grow and become a country more positive. Right? So this was the 22nd edition of the Defense Ministers meeting of Shanghai Cooperation Organization, took place in China. And here the theme of this meeting was upholding the Shanghai spirit, SCO on the move. And here defense minister from all 10 SCO member states took part here. Here you can see India and China diplomatic engagement was here, and we saw that we will be talking about various bilateral talks were there on various discussion, various instruments, various projects and various trade related deals. Then apart from this, India's stand against terrorism, what I was just discussing, that Rajnath Singh strongly condemned the 22nd April 2025 terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, and then we took out at that time basically 26 civilians lost their lives, they were killed in this attack, and we responded with Operation Sindoor. And then we refused to sign the SCO joint communique, right? India declined the sign of the final joint statement, citing the inadequate condemnation of the cross-border terrorism, and the draft omitted mention of the Pahalgam attack. Next is RBI has issued the final guidelines on due diligence of AEPS touchpoint operators. What is this? First of all, let's go by one. AEPS. What is AEPS? AEPS is your
Aadhaar enabled payment system. Aadhaar is a 12 digit number, right? So RBI, they have issued the guidelines for the due diligence of the Aadhaar enabled payment system touchpoint operators. This will streamline the process of onboarding and enhance the fraud risk management here, right? That means if an individual want to update their Aadhaar card or get a new Aadhaar card, their fingerprints are required, right? So that process will be more streamlined, and new better updated versions of it has been launched. These guidelines, they were issued under the Payment and Settlement Act of 2007 to safeguard the customers from identity theft. And this AEPS, this is operated by NPCI. Correct? Take a note of it. So you can see the new guidelines have defined the ATO as an individual onboarded by the acquiring bank who operates AEPS touchpoint using Aadhaar card numbers and biometrics or OTP authentications. Next is India's external debt rises to $736 billion and 19.1% of the GDP, says the RBI, right? That means the external debt, according to RBI, India's external debt has risen by 10%. That means we have borrowed more as compared to last year, less compared to the March 2024. We are seeing a 10% increase in our borrowing. Take a note of this. Now we are at $736 billion. The external debt to the GDP ratio increased to 19.1% at end of March 2025. That was last year 18.5%. Now it has increased to 19.1%. This is the external debt to the GDP ratio, right? Then let's talk about valuation effects, students. This effects reduce the increase in the external debt from $72.9 billion to $67.5 billion at the end of March over the March 2024. And this valuation effect due to the appreciation of the US dollar vis-a-vis Indian rupee and other currencies amounted to $5.3 billion. Moving on. Next. Also one data you can see, the composition of India's external debt was led by US dollar denominated debt at 54.2%, followed by Indian rupee 31.1%, yen 6.2%, special drawing rate 4.6%, and euro by 3.2%. Moving on to awards and recognition, students. Indian Navy holds the Investiture Ceremony 2025 and 51 naval personnel were honored for the gallantry and service. Take a note of it, right? How many individuals? 51 naval personnel were honored for the gallantry and services. This was the Naval Investiture Ceremony, right? Where was it held? It was held at the Nausena Bhavan. Correct? Investiture Ceremony, Naval Investiture Ceremony held at the Nausena Bhavan, and it was the first ceremony held at this newly constructed Nausena Bhavan. The awards were honored or conferred to honor and recognize bravery, leadership, professional achievement, and distinguished service. And 51 persons were honored here. Remember one, Yudh Seva Medal. Right? Commander Karthik Shrimal received this Yudh Seva Medal for distinguished leadership in Operation Sankalp. Next is acquisitions and mergers. Madgaon Dock Shipbuilders has acquired 51% stake in Colombo Dockyard for 452 crore rupees. Take a note of this, right? I repeat, MDL, that is Madgaon Dock Shipbuilders Limited, they have announced their first international acquisition of 51% stake in Colombo, Sri Lanka based Colombo Dockyard for $52.96 million. Now, why this is important is, students, you need to understand, in the international market, China was having a stronghold in Sri Lanka. But with this acquisition, we have also stated that we are present there and this is our backyard. So we need to protect it. We need to have our presence also in that area. So Madgaon Dock Shipbuilders, they have acquired a 51% stake and it is good for India's reputation. Next, science and technology. Japan has launched climate change monitoring GoSat GW satellite on mainstay H2A rocket. Right, first of all, what is this GoSat GW? That is your global observing satellite for greenhouse gases and water cycle satellite. What does this mean is, this satellite will be monitoring the greenhouse gas emissions, chlorofluorocarbon emissions, right, carbon dioxide emissions, sulfur dioxide emission, carbon monoxide emission, right, they will be monitored here. Apart from this, this will be also monitoring the water cycle
of earth, right? That how our oceans are behaving, what is the temperature there, what is the climate there, what is the impact of gravity of moon on those water bodies, how they are impacting, and because of it, what is the water cycle, the rain pattern, and the environment weather pattern that we are seeing. This satellite was launched by Japan using the H2A rocket. Take a note of this. Next is sports. McLaren's Lando Norris has won the Austrian Grand Prix 2025 and has secured the third 2025 F1 victory. Take a note of the students, can be asked. Lando Norris is a British F1 driver. He represents McLaren and he clinched his third F1 victory for 2025 season. Then next you can see Lando Norris first, second is Oscar Piastri of McLaren from Australia, and third is Charles Leclerc of Ferrari, who drives for Ferrari and he is from Monaco. Next is important day, students. World Allergy Week is observed from 29th of June to 5th of July, and this is to raise global awareness about the allergic disease and their increasing prevalence. There is a theme here: anaphylaxis, a preventable threat. I repeat, anaphylaxis, a preventable threat is the theme here for the World Allergy Week 2025. Next is National Statistics Day, observed on 29th of June. This day is basically observed across 29th of June to honor the contributions of a very famous statistician, that is PC Mahalabonis. Right? I repeat, PC Mahalabonis, who is also known as the father of modern statistics in India. This marked the 19th observance of this National Statistics Day and 132nd birth anniversary of PC Mahalabonis. Right? Take a note of it. Next is also one more thing, students. There is a theme here. What is the theme? 75 years of National Sample Survey. Next is CEA organized All India Electric Safe Awareness Program on Electrical Safety Day in New Delhi. So CEA, what is CEA? CEA is your Central Electricity Authority. It comes under the Ministry of Power and they have collaborated with Bombay Suburban Electric Supply. I repeat, Bombay Suburban Electric Supply, and it was organized. They have organized the Electricity Safe Awareness Program. Correct? It was on Electricity Safe Day that took place. When did it took place? It took place on 26th of June. Right, this day serves as a powerful reminder of India's commitment to creating a no-harm electrical ecosystem that involves with India's clean and smart energy solutions. There is a theme also for this: Smart Energy Safe Nation. That is Smart Energy Safe Nation. Moving on to International Day of Tropics, observed on 29th of June. This day is observed basically to highlight the ecological and cultural importance of tropical regions. Right? It talks about critical issues such as your climate change, deforestation, poverty, urbanization, and many more. Then moving on to International Asteroid Day, observed on 30th of June. This day is to raise awareness about the asteroids and that are your near Earth orbit or near Earth objects, and also we need a planetary defense because we cannot afford a big asteroid attack on Earth, right? So we need a planetary defense against it. Then next is International Day of Parliamentarism, observed on 30th of June, right? Parliamentarism observed on 30th of June. What this day talks about? This day talks about the observance of this day that raises the awareness about the role of parliament in upholding democracy, accountability, human rights, the gender representation, and day-to-day working of a country. There is a theme here: achieving gender equality action by action is the theme for this day. Here you can see achieving gender equality action by action. Then next is state news, students. Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis has inaugurated hedging desk in Pune to help the farmers avoid losses. This, I repeat, hedging desk. This is a dedicated platform that has been launched in Pune under the SMART project. That is, what is this SMART project? This will ensure fair market prices and increased income for the farmers in Maharashtra. Right? This hedging desk. This will focus on cotton, turmeric, and maize crops, and the initiative will be expanded to other crops once successful in these crops. Right? So that's all for the day, students. Take a note of it. Then students, now let's move to the revision part that will be very beneficial for your learning.
Moving on, identify the person who was conferred with the International Buddha Peace Award 25 during a grand ceremony organized by Maitri Peace Foundation in Guwahati, Assam. So, who is that person? Dr. Mustafa Yusuf Ali Go. Right, he was conferred with this International Buddha Peace Award 2020 by Lakshman Prasad Acharya, the governor of Assam. Next is who became the first Indian lawyer to be conferred with the Medal of Honor by the World Jurist Association during the World Law Congress held in May 2025. So, who became the first Indian lawyer? Bhuvan Ribhu. Here, this Medal of Honor is an esteemed award presented by WJA, that is World Jurist Association. It is for recognizing the Bhuvan's 2-decade-long legal efforts in protecting the children from child marriage, trafficking, sexual abuse, forced labor, and many more. Next, the Water Heritage Museum, that is operated by the Center for Water Resources Development and Management, situated where has been included in the global network of water museums, a flagship initiative of UNESCO Intergovernmental Hydrological Program in May 2025. So this Water Heritage Museum, is it located where? It is located in Kozhikode, Kerala. And this is the third place or third location in India that has been added to this initiative. Earlier it was Jal Water Museum, right? This Jal Water Museum, it is in Udaipur, Rajasthan, and Living Water Museum, this is in Pune, Maharashtra. And now third is Water Heritage Museum. So this is the third museum added to this list. Next, name the Brazilian microbiologist who was awarded with the World Food Prize 2025 for promoting sustainable agriculture through the development of biological alternatives to chemical fertilizers. So, name the Brazilian microbiologist, Dr. Mariangela Hungria. Right, she will be officially receive this award at the World Food Prize Borlaug Dialogue International Symposium that will be held in October 2025, and with a monetary prize of 500,000 US dollar. She became the 10th woman to be honored with this World Food Prize. Next, pick out the incorrect statement regarding the Forbes report 2025 list of the world's highest paid athletes released in May. If we look at the options here, only the option C is incorrect. C is saying among the top 50 highest paid athletes, UK leads with 29 athletes featured the highest representation from any country. It is not UK but United States of America with 29 leads in this list. Next, President of President of India, Draupadi Murmu ma'am, she was conferred with the 58th Gyanpit Award on Jagadguru Ram Bhadracharya at an event held in Delhi for his contribution to literature in the field of what language? In Sanskrit, right? So this was 58th Gyanpit Award given to Jagadguru Ram Bhadracharya for his contribution to literature in Sanskrit. If it is talked about Urdu language, for contribution to literature in Urdu, Sampuran Singh Kalra was also awarded here. Next, Forbes released the 10th Forbes 30 under 30 Asia list. Identify the Indian personality who was not featured in this list. So Vidit Gujarati is an individual who was not featured in this list. The rest all were featured here. Next, mention the family that secured the top position on the Sunday Times Rich List 2025 in May with a net worth of 35.3 Great Britain pound, maintaining their position as the wealthiest in the UK. So, which is that family? Name that family. It is Gopi Hinduja and family, the richest in UK. Correct, with a net worth of 35.3 billion euros approximately. Next, in May, Prime Point Foundation announced the recipients of the Sansad Ratna Awards, honoring 17 members of the Parliament and 2 parliamentary standing committees for their exemplary parliamentary performance in both Lok Sabha and Rajya Sabha.
Which Indian state received the highest number of Sansad Ratna awards as announced by Prime Point Foundation? Right? So which Indian state received this? It was received by Maharashtra. Right? And these awards will be presented during the 15th edition of the Sansad Ratna Awards. Next, in May, Bengaluru, Karnataka based writer, lawyer, and activist Banu Mustaq, along with translator Deepa Bhashti, has won the International Booker Prize 25 for the Kannada short story collection that was titled Heart Lamp Selected Stories. Next, the 78th edition of the annual Cannes International Film Festival was held in Cannes, France. Identify the correct statement regarding the 78th annual Cannes International Film Festival. If we look at the options, we have to find the correct statement. So option B is right, C is right, A is wrong. A is saying Indian filmmaker Jafar Panahi was awarded with the festival's highest honor, that is Palma d'Or, for his film The President's Cake. Right? Is it correct? So Jafar Panahi was honored with this award, but not for this President's Cake. The film, his drama film it was just an accident. It was just an accident. This is the drama film for which he was honored with this Palma d'Or. Next is in May, singer and humanitarian Sumit Tapu was conferred with the Champion of the Order of Fiji, the highest honor of Fiji. Along with him, who other people were awarded with this Companion of the Order of Fiji? Apart from him, we will be seeing Dr. Krupali Tapu and Madhusudan Sai. They were awarded with this order, that is Companion of the Order of Fiji. This is equivalent to India's Bharat Ratna. Next, students, let's move to the homework part. First question, tell me which state will be launching pink e-rickshaw. Second question, tell me recently in which state the Uber, Ola, two-wheeler riders were banned, and tell me the reason also for which they were banned. Third question, tell me Dash will become the world's first fully renewable powered city. Which is it? Fourth question, tell me recently Mahila Samvad. This was launched. What is the aim of this? Why was this launched? So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सैनिटरी सेलिब्रेशन ऑफ आचार्य 108 विद्यानंद जी महाराज इन न्यू दिल्ली। देन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इशू की गाइडलाइंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज। देन हम बात करेंगे भूपेंद्र यादव जी की, जिन्होंने चेयर किया 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग को प्रोजेक्ट एलिफेंट की, जो कि देहरादून में हुई। देन यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने ले किया फाउंडेशन स्टोन इंडिया के पहले ग्रीन डाटा सेंटर का गाजियाबाद में। ये काफ़ी न्यूज़ एंड इसके अलावा काफ़ी सारी न्यूज़ डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे डेली बेसिस पे ये वीडियोस अपलोड करते हैं, तो ये वीडियोस जरूर देखा करो। बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below.
चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सैनिटरी सेलिब्रेशन, सैनिटरी मतलब 100 सेलिब्रेशन, 100वां सेलिब्रेशन किया गया ऑफ आचार्य 108 विद्यानंद जी महाराज इन न्यू दिल्ली। टेक अ नोट ऑफ दिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये जो इवेंट था इसको ऑर्गेनाइज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद भगवान महावीर हमेशा भारती ट्रस्ट जो कि न्यू दिल्ली का है, राइट। एंड ये जो सेलिब्रेशन था आपके काफ़ी फेमस जैन स्पिरिचुअल लीडर आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के से ऊपर था, के लिए था। एंड विज्ञान भवन में न्यू दिल्ली में ये इवेंट हुआ था। ऑल्सो ये 38वीं एनिवर्सरी थी आचार्य विद्यानंद जी की, जब उनको आचार्य जी का टाइटल उनको दिया गया था, उनको स्थापित किया गया था, राइट। एंड ये जो सैनिटरी ईयर है ये 28 जून 2025 से 22 अप्रैल 2026 तक ऑब्जर्व किया जाएगा, जहाँ पे कल्चर, लिटरेचर, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल इनिशिएटिव्स के ऊपर काम किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। देन इसी के अलावा ड्यूरिंग दिस इवेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनको सम्मानित किया गया धर्मा चक्रवर्ती। इस सम्मान के द्वारा किसने दिया? जैन कम्युनिटी के द्वारा इनको बेस्ट ऑफ किया गया, इनको सम्मानित किया गया। देन यहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बायोग्राफिकल वॉल्यूम ये लॉन्च की गई डिटेलिंग द आचार्य विद्यानंद जी का जो पाथ रहा है, राइट, लिटरेरी वर्क्स रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स रहे हैं एज ए रिफॉर्मर, उनके ऊपर यहाँ पे बताया गया। फिर यहीं पे याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा मिलकर यहाँ पर एक पोस्टेज स्टैंप एंड एक 100 रुपीज का कमेमोरेटिव कॉइन भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इन्होंने इशू किया गाइडलाइंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, यहाँ पे जो गाइडलाइंस है ना वो क्या कहती हैं। सबसे पहले देखो ऐसे समझो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ग्रो करना चाहते हैं, राइट। नॉन फॉसिल या फिर नॉन रिन्यूएबल एंड फॉसिल फ्यूल पे हम अपना डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स मस्ट हैं, बहुत ज़रूरी हैं, राइट। तो इनके लिए कुछ एजेंसीज हैं इंडिया में जो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जैसे NTPC हो गया, SECI, SJVN, NHPC। तो इनको यहाँ पर बेसिकली अब एक सर्टिफिकेशन के तौर पर 5 साल के लिए एक सर्टिफिकेशन मिलेगा जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज का, राइट। 5 साल तक ये वैलिड रहेगा, 5 साल के बाद इनको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। एंड ये जो कंपनीज हैं रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट को अक्रॉस इंडिया प्रमोट करेंगी, करेक्ट। एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इशू की गई हैं गाइडलाइंस इनके लिए। एक पहली चीज़ कि ये जो कंपनीज है जो यहाँ पे REIAS के तौर पे अपॉइंट की जाएंगी, राइट, ये कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंडर रजिस्टर होनी चाहिए इंडिया में, राइट, इंडियन कंपनीज। एंड 5 साल तक ये वैलिड रहेंगी। एंड जो प्राइवेट सेक्टर इंडियन कंपनीज हैं उनकी नेटवर्थ होनी चाहिए 500 करोड़ से ज़्यादा, राइट, एंड अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग ऑफ A, तब वो यहाँ पे रजिस्टर की जा सकती हैं एज REIAS। एन इंपॉर्टेंट चीज़, 5 साल बाद वापस से यहाँ पे इस सर्टिफिकेशन इसके लिए वापस से अप्लाई करना पड़ेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने चेयर किया 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग को ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कहाँ पर हुई? देहरादून में। एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, राइट, माइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा इंडियन रेलवेज, इसके अलावा NHAI, इन सब के साथ भी पार्टनर किया गया ताकि फर्दर हम प्रोजेक्ट एलिफेंट को ग्रो कर सकें एंड एलिफेंट के कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जा सके इन देहरादून। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और ये जो मीटिंग हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी में हुई थी। नेक्स्ट पर आते हैं, यूपी की न्यूज़ डिस्कस करते हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर गाजियाबाद में। देखो डाटा सेंटर क्या होता है? जहाँ पर आपका डाटा स्टोर होगा, राइट, वहाँ पे डाटा की प्रोसेसिंग होगी, एनालिसिस होगी एंड वहाँ से आप फर्दर मीनिंगफुल डाटा वहाँ पे मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स होंगे, करेक्ट, क्लाउड यहाँ से रन कर रहा होगा। तो इस डाटा सेंटर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट या तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से फुलफिल हो सकती है या फिर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, जो कि ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, राइट, उसमें भी ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे इंडिया का पहला ग्रीन डाटा सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा फ्रॉम ग्रीन सोर्सेज एंड ये गाजियाबाद यूपी में इस्टेब्लिश किया जाएगा, राइट। 1000 करोड़ रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने इशू किया मॉडल रूल्स को फॉर ट्री फेलिंग ऑन फार्मलैंड फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। मान लो किसी एक फार्मर का एक लैंड है, यहाँ पे वो अपना एक फार्म हाउस बनाना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं, राइट। अगर ये पेड़ 10 से ज़्यादा हैं
तो यहाँ पे इस फार्मर को परमिशन लेनी पड़ेगी एंड उनको रजिस्टर करना पड़ेगा नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर, जहाँ पर उनको अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी एंड वहाँ पर फर्दर 10 से ज़्यादा जो ट्रीज है उनको काटा जाएगा, उनकी पिक्चर्स अपलोड होगी, उनका प्रॉपर यहाँ पे जायरा होगा एंड देन वहाँ पर उनको अप्रूवल मिल जाएगा एंड तब वो वहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना में। टेक अ नोट ऑफ दिस। इससे तेलंगाना में टर्मरिक एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा एंड टारगेट रहेगा कि $1 बिलियन का हम टारगेट अचीव कर लें बाय 2030 तक इन टर्मरिक होता है हल्दी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। IEP जो कि है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये एक ग्लोबल थिंक टैंक है। इन्होंने रिलीज किया ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 को। अगर बात करें इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक रहेगी 115, ये है 2025 की। 2024 की इंडिया की रैंक थी 116, तो हमारा एक -1 मतलब हम कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए दिखे हैं यहाँ पे, राइट, ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ये जो रिलीज किया डाटा, ये 19th एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो आइसलैंड ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी 17वीं बार, 17th टाइम इन्होंने यहाँ पे ये पोजीशन को सिक्योर करा है एंड 163 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक रहेगी 115वीं। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा IEP का? ये रहेगा सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। एक और चीज़ यहाँ पे रैंक देखते हैं। पहला आइसलैंड, दूसरा आयरलैंड, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा ऑस्ट्रिया, पांचवा स्विट्जरलैंड एंड इंडिया 115वें पोजीशन पे। नेक्स्ट, इंडियाज परसेंटेज ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन टू द टोटल पॉपुलेशन डिक्लाइंड फ्रॉम 0.11% टू 0.06% इन 2024। ये UN की रिपोर्ट कहती है। मतलब आपको याद होगा जब आप बच्चे थे तो आपको वैक्सीन्स लगी होंगी, राइट, टीका जिसको कह देते हैं, तो इंजेक्शंस आपको लगे होंगे, वैक्सीन्स, टीके ये लगे होंगे, राइट। तो लेकिन काफ़ी सारी ऐसी पॉपुलेशन है, राइट, उनको ये चीज़ नसीब में नहीं है बेचारों को, राइट, वो उनको ये नहीं लगता है, वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं यहाँ पे इस बेनिफिट को। तो ऐसी पॉपुलेशन के लिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे, जहाँ पर लोएस्ट टू लोएस्ट तबके तक यहाँ पर वहाँ पहुँचा जा सके एंड जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको ये वैक्सीन्स लगाई जा सकें, राइट। तो ये डाटा बताता है कि जो जीरो डोज चिल्ड्रन है, मतलब जिनको एक भी डोज नहीं लगी, वो पॉपुलेशन गिरती हुई दिखी है, जो कि पहले 0.11% थी, वो गिरकर अब 0.06% हुई है। मतलब पॉजिटिव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर जो वैक्सीन्स हैं, कोई भी वैक्सीन हो चाहे वो लगी है, मतलब एक भी अगर वैक्सीन लगी है वो यहाँ पे काउंट हुआ है। नेक्स्ट, यहीं पे आप देख सकते हैं, अगर मैं अंगोला की बात करूं 1.1%, येमन 1.6%, नाइजीरिया 0.98%, इंडोनेशिया 0.23%, पाकिस्तान 0.16 पर है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैंने बताया कुछ की इनिशिएटिव्स रहे हैं, जैसे जीरो डोज इंप्लीमेंटेशन प्लान ऑफ 2024, मिशन इंद्रधनुष 2014 से चलता हुआ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 22वें SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीट हमें देखने को मिली थी चाइना में, किंगडाओ चाइना में। अब देखो इसके दौरान आपने देखा होगा काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे राजनाथ सिंह ने जो SCO का यहाँ पे इवेंट था उस पर जो डिक्लेरेशन साइन करना था वहाँ पर वो साइन नहीं किया, राइट। वो क्या था? वो बेसिकली था आपका SCO जॉइंट कम्युनिक, जो साइन नहीं किया गया था। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे इंडिया के ऊपर पहलगांव में जो टेरर अटैक हुआ था, राइट, उसकी सराहना नहीं या फिर बेसिकली हम बोले निंदनीय नहीं की गई, उसको यहाँ पे उसके ऊपर डिस्कशन ही हमें देखने को नहीं मिला, जो कि इंडिया एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम यहाँ पे डिस्कशन होगा, राइट, उसको उसके अगेंस्ट बोला जाएगा, कंडेम किया जाएगा टेररिज्म को, इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएंगे ताकि टेररिज्म को रोका जा सके, इसके अगेंस्ट हमें फंडिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होती हुई दिखी। इसीलिए इंडिया कहीं ना कहीं एक अगर हम बोले तो इंडिया खुश नहीं था एंड इंडिया ने यहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया टू साइन दिस SCO जॉइंट कम्युनिक, राइट। एंड इंडिया ने पहलगांव के अगेंस्ट जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो ये थी 22वीं SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, जो कि किंगडाओ चाइना में हुई थी। हमारे राजनाथ सिंह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने यहाँ पे इसमें पार्ट लिया एंड उन्होंने यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया टू साइन दिस SCO जॉइंट कम्युनिक। नेक्स्ट, RBI ने इशू की फाइनल गाइडलाइंस ऑन ड्यू डिलिजेंस ऑफ AEPS टच पॉइंट ऑपरेटर्स, राइट। देखो AEPS क्या होता है? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम।
ठीक है। तो आपकी केवाईसी होगी, केवाईसी के लिए आपकी प्रॉपर डिटेलिंग होती है, एंड केवाईसी में आपका फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे एक कह सकते हैं लेयर है सिक्योरिटी की, ये भी ज़रूरी है। तो इसका प्रॉपर डाटा होना, राइट, कौन आपका डाटा एक्सेस नहीं कर सकता, या कोई आपको दूसरा फ्रॉड आपका इम्प्रेजमेंट नहीं कर रहा है, मतलब या फिर बोले आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं हो रही है, तो उन सबको ध्यान रखता है, राइट। एंड इसी के लिए यहाँ पे AEPS टच पॉइंट ऑपरेटर्स ATOs इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि फ्रॉड रिस्क को रोका जा सके, उसको मैनेज किया जा सके, एंड ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, ताकि जो फ्रॉड्स हैं ऐसे इम्प्रिजन या फिर हम बोले आइडेंटिटी थेफ्ट के, उनको रोका जा सके। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पे आपको बेनिफिट देखेगा, जैसे आधार नंबर से आपका बायोमेट्रिक्स होगा, OTP ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, आपका बायोमेट्रिक्स हो जाएगा, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो $736 बिलियन तक पहुंच गया है। लास्ट ईयर से 10% ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली है। एंड यहीं पे अगर मैं इंडिया का डेट टू GDP रेशियो की बात करूं, वो भी बढ़ के 19.1 हो गया है। साइड सी बात है, अगर 10% हमारा डेट बढ़ेगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो डेट टू GDP रेशियो भी बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर हम देखें लास्ट ईयर 2024 में जो डेट टू GDP रेशियो था वो था 18.5% का, जो कि इस साल 2025 में बढ़ के 19.1% हो गया। एंड हमारा जो डेट है कितने परसेंट से बढ़ गया है? 10% से लास्ट ईयर के कंपैरिजन, जो कि बढ़ गया है टू $736 बिलियन। नेक्स्ट एक चीज और आप समझिए स्टूडेंट्स, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो डॉलर है ना, राइट, वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो डॉलर अगर बढ़ता है ना, तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स को तो बहुत बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं रहता है, बल्कि नेगेटिव चीज़ हो जाती है, क्योंकि हमें अब डॉलर ज़्यादा इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे डॉलर के बदले, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना है। हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं ना कि एक्सपोर्ट, राइट। तो इसीलिए डॉलर का बढ़ना हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। अभी इंडियन नेवी के द्वारा इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुई, जहां पे 21 नेवल पर्सनल को ऑनर किया गया फॉर गैलेंट्री एंड सर्विस के लिए। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, कमांडर कार्तिक श्रीमल, इन्होंने रिसीव किया युद्ध सेवा मेडल को फॉर डिस्टिंग्विश्ड लीडरशिप इन ऑपरेशन संकल्प, जो कि एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन है इन द इंडियन ओशन रीजन। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इन्होंने एक्वायर किया 51% स्टेक कोलंबो डॉकयार्ड में फॉर 452 करोड़ रुपीस। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि श्रीलंका में चाइना का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था, प्रेजेंस देखने को हमें मिलता था उनकी नेवी का, राइट। अब इंडिया के मडगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने जब ये $52.96 मिलियन से 51% स्टेक एक्वायर किया है कोलंबो डॉकयार्ड PLC का, राइट। तो ये, या फिर हम बोले राइट, कोलंबो डॉकयार्ड PLC का, तो इससे हमें काफ़ी एक प्रेजेंस देखने को मिलेगी इंडिया की, इंडियन नेवी की, राइट, इन श्रीलंका, जो कि कहीं ना कहीं हमारे बैकग्राउंड ही है। हमें वहाँ पे अपना प्रेजेंस स्थापित करना चाहिए और ज़्यादा स्थापित करना चाहिए, राइट, ताकि हम जो चाइना का भी जो प्रेजेंस है उसको काउंटर कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक पे स्टूडेंट्स। जापान ने लॉन्च की क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग गोसेट GW सैटेलाइट को यूजिंग H2A रॉकेट। देखो ये जो GOSAT गोसेट GW, ये क्या है? ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेज एंड वाटर साइकिल, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन गैसेस हो गई, राइट। तो इनको मॉनिटर करने का काम करेगा कि कितना कहाँ पर है, क्या सोर्सेज हैं, कितनी जनरेट हो रही है, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसी के अलावा जो इंडिया वर्ल्ड में जो पूरे अर्थ की वाटर साइकिल है उसको स्टडी हम करेंगे, राइट। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे जो ओशन वाटर बॉडीज़ हैं उसका ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे कैसे वेव्स आती हैं, कैसे क्लाइमेट, कैसे टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होता है, राइट। और टेम्परेचर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उससे क्या वाटर साइकिल पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी की जाएंगी। जापान के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है H2A रॉकेट की मदद से। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के ऊपर। मैक्लेरन के ड्राइवर लैंडो नॉरिस, ये इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है एंड थर्ड 2021 F1 विन रहेगी, मतलब 2025 की तीसरी विक्ट्री है जो इन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटिश ड्राइवर है एंड मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। लेट मी शो यू। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन UK से, सेकंड पे ऑस्कर पिएस्ट्री मैक्लेरन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड पर चार्ल्स लेसलर ऑफ फरारी फ्रॉम मोनाको।
नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड एलर्जी वीक 29 जून से लेके 5 जुलाई तक ऑब्जर्व किया जाता है एंड एलर्जीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड इसका जो इम्पैक्ट होता है हेल्थ पर उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम भी याद रखेंगे, एनाफिलेक्सिस अ प्रिवेंटेबल थ्रेट। नेक्स्ट आते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली टू रेज और टू ऑनर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं एक काफ़ी फेमस स्टैटिस्टिशियन के जो है पीसी महालनोबिस महालानोबिस, राइट, पीसी महालानोबिस, राइट। ये इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। 19वां ऑब्जर्वेंस रहेगा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का एंड 132वीं बर्थ एनिवर्सरी रहेगी इनकी। एक और चीज़ यहाँ पे थीम याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इस डे की क्या रहेगी, 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे एंड पहली बार नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे को 2007 में ऑब्जर्व किया गया था 29 जून को। इसके बाद आ जाते हैं CEA, इन्होंने ऑर्गेनाइज करा ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सेफ अवेयरनेस प्रोग्राम को इलेक्ट्रिसिटी सेफ डे के दिन इन न्यू दिल्ली। इलेक्ट्रिसिटी सेफ डे 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, एंड इससे बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, राइट, इन ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, इन्होंने बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ पार्टनर किया एंड ऑर्गेनाइज कराया इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी डे को न्यू दिल्ली में एंड इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। इवन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अभी रिसेंटली गूगल के द्वारा बोला गया कि जो पावर ग्रिड में या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में जो लोग काम करते हैं वहाँ पे उनको स्किलिंग की जाएगी एंड कुछ लार्ज अमाउंट में लोगों को ट्रेन भी किया जाएगा ताकि जो आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो नीड है उसको फिल किया जा सके एंड जो AI डाटा सेंटर्स को पावर चाहिए वो कॉन्टिन्यूस उसकी सप्लाई देखने को मिल सके। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ट्रॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, ट्रॉपिकल रीजन के लिए क्या उनका इकोलॉजिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, राइट। ट्रॉपिकल रीजन हो गया कि जहाँ पर आपका बीच है, आपका लार्ज वाटर बॉडीज हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, राइट, वो आपके ट्रॉपिकल एरियाज हो जाते हैं आसपास में। ट्रॉपिकल फ्रूट्स हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 30 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। एस्ट्रॉयड एक काफ़ी ज़्यादा डेथ या फिर हम बोले खतरनाक है हमारे अर्थ के लिए, तो इसके अगेंस्ट हमें एक प्लानिटरी डिफेंस है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, इन नियर अर्थ ऑर्बिट्स को स्टडी करने के लिए कि कौन सा किस स्पीड से किस डायरेक्शन में आ रहा है, किधर से आ रहा है, राइट। कई एस्ट्रॉइड्स तो होते हैं आपके मीटियोर्स होते हैं, वो छोटे होते हैं, वो अपने एटमॉस्फेयर में एंट्री करते ही वो जल जाते हैं, राइट, वो राख बन जाते हैं। बट बड़ों के लिए उनका प्रॉपर स्टडी होना, उनकी प्रोजेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता है एंड हमें ये पता है कि अगर वो एस्ट्रॉयड हमारी तरफ आ रहा है, हम अगर आपको याद हो एक डार्ट मिशन लॉन्च किया गया था, वो यही एक पायलट मिशन था कि अगर मान लो हमें किसी एस्ट्रॉयड को हल्का सा डिफ्लेक्ट करना है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। यही वो डार्ट मिशन था जो जाके एक एस्ट्रॉयड पे टकराया था एंड उसकी हल्की सी ट्रैजेक्टरी चेंज कर दी थी। इस एस्ट्रॉयड का नाम बता दो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, हम अर्थ को सेफ रख सकते हैं। अगर कोई थ्रेट है तो उसको स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म 30 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि पार्लियामेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके, राइट। इनका एक बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने में, जेंडर रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करने में, राइट। एंड इसीलिए आप देखेंगे इस साल की थीम रहेगी अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ पे स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इनॉग्रेट किया हेजिंग डेस्क को इन पुणे टू हेल्प द फार्मर्स अवॉइड लॉसेस। ये स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंडर लॉन्च किया गया है जो कि इंश्योर करेगा फेयर मार्केट प्राइसेस एंड इंक्रीज इनकम फॉर द फार्मर्स इन महाराष्ट्र। इससे क्या होगा, सप्लाई चेन बन सकती है, राइट, प्रॉपर सप्लाई चेन बनाई जा सकती है कि अगर कहीं पे डिमांड एंड सप्लाई बहुत अच्छा हो सकता है, राइट। जब डिमांड होगी तभी फार्मर्स की क्रॉप्स को सेल किया जा सके ताकि प्राइसेस भी कंट्रोल में रहें एंड जो राइट प्राइस है फार्मर को अपनी क्रॉप का वो मिल सके। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा एंड फार्मर की इनकम यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी एंड लॉसेज कम होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होती हुई दिखेगी। As per the United Nations Development Program report titled Human Development Report, a matter of choice, people and possibilities in the age of artificial intelligence, India's rank in the 2023 Human Development Index is what?
India stands at 130 position and it is Iceland that secured the first position. Second was Norway. Third was Switzerland and then Denmark. Second, third and fourth. Next, Dash topped among the developed and emerging economies in terms of both manufacturing and service activity as per the latest Purchasing Managers Index report released by JP Morgan. So who topped among the developed and emerging economies here? It is India that has topped among the developed and emerging economies. We are the fastest growing economy. We should also know that. Then next is, which of the following state is not among the top 5 Indian states with the highest GST collection for FY25? In this, it is not West Bengal, but here UP will be there. Then Maharashtra first, Gujarat second, third Karnataka, fourth Tamil Nadu, and fifth is UP. Moving on, who launched the report on India's priority corridors for zero emission trucking in May, aimed at promoting cleaner and sustainable freight movement? Ajay Kumar Sood. Next, according to the global report on internal displacements released by Internal Displacement Monitoring Center and Norwegian Refugee Council in May, what was the total number of internal displacements reported in India in 2024? So 5.4 million internal displacements were reported within India itself, because that can be any reason, war, natural climates, or any war, anything can be there. Next is, identify the organization released the 23rd edition of the annual South Asian Press Freedom Report in May on the behalf of South Asia Media Solidarity Network. So identify that organization. It is International Freedom of Journalists. Next, SIDBI, they have released a report understanding the Indian MSME sector, right? And here it is talking that about the Indian MSME sector based on a survey of 2097 MSMEs across 19 sectors in manufacturing, service and trading. Question asked is, according to MSME contribution to India's total export has steadily grown, as I mentioned, 43.59% in FY23, 45.73% in FY24, and it grew to 45.79% in FY25. Only a marginal increase of 0.07% can be seen, 0.06, almost 6-7% can be seen. Next, according to Cantor Brands 2025 World's Most Valuable Global Brands Report, which of the following companies was not among the Indian brands featured in the top 100 most valuable brands globally? Among the following, if we see, Wipro was not among the list. If we see, TCS stands at 45th position, HDFC Bank at 56th position, Airtel at 66th position, and Infosys at 73rd position. वाटर हेरिटेज म्यूजियम ऑपरेटेड बाय द सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ये सिचुएटेड है कहाँ पर, जिसको इंक्लूड किया गया ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम्स में, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम का इन मई 2025, राइट। तो ये वाटर हेरिटेज म्यूजियम कहाँ पर है? ये कोझिकोडी केरला में है। एंड ये ऐसा तीसरा म्यूजियम है जो कि इस लिस्ट में ऐड किया गया। इससे पहले आप देखेंगे तो जल वाटर म्यूजियम ये उदयपुर में है, जिसको ऐड किया गया था सबसे पहले, उदयपुर राजस्थान में। फिर लिविंग वाटर म्यूजियम ये पुणे में है, जिसको ऐड किया गया पुणे महाराष्ट्र में। और अब वाटर हेरिटेज म्यूजियम। नेक्स्ट, उन ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नाम बताओ हु वाज अवॉर्डेड द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट। तो कौन है वो ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया, राइट? उनका नाम बताओ। तो वो है डॉक्टर मैरी एंजेला हंगेरिया, राइट। नेक्स्ट, फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है रिगार्डिंग द फोर्ब्स रिपोर्ट 2025 की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट। सभी सही है यहाँ पर, लेकिन सी गलत आ जाता है। बस सी कह रहा है अमंग द 50 हाईएस्ट पेड एथलीट्स यूके इन्होंने लीड किया 29 एथलीट से, हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एनी कंट्री। तो यूके नहीं, यूएसए। नेक्स्ट, अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम इन्होंने कन्फर किया 58th ज्ञानपीठ अवार्ड ऑन जगत गुरु राम भद्राचार्य एट एन इवेंट फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन लिटरेचर। किस, इन विच लैंग्वेज? इन संस्कृत लैंग्वेज, राइट। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी संस्कृत लैंग्वेज, राइट। एंड अगर पूछा जाए एक और यहाँ पे व्यक्ति को सम्मानित किया गया, संपूर्ण सिंह कारला, राइट। ये किससे है? लिटरेचर इन उर्दू लैंग्वेज के लिए संपूर्ण सिंह कारला, संस्कृत लैंग्वेज के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। नेक्स्ट, फोर्ब्स ने रिलीज की 10th फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट। आइडेंटिफाई द इंडियन पर्सनैलिटी जो इस लिस्ट में फीचर नहीं है।
तो विदित गुजराती इस लिस्ट में फीचर नहीं होंगे। नेक्स्ट, उस फैमिली का नाम बताओ जिन्होंने टॉप पोजीशन सिक्योर करी ऑन द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2025 की विद अ नेटवर्थ ऑफ 35.3 पाउंड maintaining 35.3 बिलियन पाउंड मेंटेनिंग देयर पोजीशन एज द वेल्दीएस्ट इन यूके। तो वेल्दीएस्ट फैमिली कौन सी है? वो है गोपी हिंदुजा एंड फैमिली। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। इन्होंने अनाउंस किया दैट द रेसिपिएंट्स ऑफ द संसद रत्न अवार्ड्स ऑनरिंग 17 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 2 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज फॉर देयर एग्जाम्पलरी पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। किस इंडियन स्टेट ने रिसीव किया हाईएस्ट नंबर ऑफ सांसद रत्न अवार्ड्स को? तो महाराष्ट्र के द्वारा सबसे ज़्यादा सांसद रत्न अवार्ड से इनके यहाँ के लोगों को रिसीव हुआ। नेक्स्ट, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड राइटर, लॉयर एंड एक्टिविस्ट बानू मुश्ताक अलॉन्ग विद ट्रांसलेटर दीपा भशस्ती, इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 को जीता फॉर कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, जिसका टाइटल रहेगा हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज। नेक्स्ट है अभी 78th एनुअल केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमें देखने को मिला। इसमें से पूछा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सभी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि ईरानियन फिल्म मेकर जाफर पनाही, इनको फेस्टिवल के हाईएस्ट ऑनर पामा दियोर से सम्मानित किया गया फॉर उनकी ड्रामा फिल्म द प्रेसिडेंट्स केक। नहीं, प्रेसिडेंट्स केक के लिए इनको यहाँ पे नहीं सम्मानित किया गया था, बट इनकी जो ड्रामा फिल्म थी वो थी इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, जिसके लिए इसको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें सिंगर एंड ह्यूमैनिटेरियन सुमित टापो, इनको कन्फर किया गया विद द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फिजी का। अलॉन्ग विद हिम किन को यहाँ पे अवार्ड किया गया? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से। तो इनके अलावा अगर हम देखें डॉक्टर कृपल्ली तापो एंड मधुसूदन साय, इनको सम्मानित किया गया है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट अवार्डेड द गोल्ड अवार्ड इन द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस एज अनाउंस्ड बाय DARPG अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस इन मई 2025। तो वो रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन जिनको कन्फर किया गया विद द एशियन एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन बाय द एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट एंड लीडरशिप ऑफ एथलेटिक्स अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट। तो आइडेंटिफाई क्रॉस पर्सन को वो कौन है? वो है डॉक्टर एदिल जे सुमाइरवाला। फिर आ जाते हैं इसके बाद मेंशन द नेम ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर हु वाज कन्फर्ड विद द गोल्डन ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से कनाडा बेस्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इनको इससे सम्मानित किया जाएगा। वो है जग्गी वासुदेव। लेकिन जग्गी वासुदेव तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि जग्गी वासुदेव को ही सदगुरु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द होमवर्क पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी विच स्टेट विल बी लॉन्चिंग पिंक ई-रिक्शा। Second question, tell me recently in which state the Uber, Ola, two-wheeler riders were banned, and tell me the reason also for which they were banned. Third question, tell me dash will become the world's first fully renewable powered city. Which is it? Fourth question, tell me recently Mahila Samvad. This was launched. What is the aim of this? Why was this launched? So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.